नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। जब आप मैनेजमेंट स्टडीज़ के रिगार्डिंग कॉलेजेस सर्च करना स्टार्ट करते हो तो जनरली प्रेफर्ड लोकेशन दो होते हैं जो भी नॉर्थ इंडिया का स्टूडेंट होता है। एक तो पुणे, दूसरा बैंगलोर ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स बहुत सारे हैं और कॉलेजेस भी उसी प्रोपोर्शन में बहुत सारे हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी में और कॉलेज का नाम है ISBR बिजनेस स्कूल। हमने सोचा कि यहाँ की जो रियलिटी है, अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो यहाँ पढ़ाई का क्या माहौल है, किस तरीके के प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इन एंड आउट, जो भी सवाल आपके मन में होते हैं जब आप एक कॉलेज को कंसिडर करते हो, वो सारे के सारे सवालों का जवाब हम कोशिश करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से मिलकर बात करें। क्या नाम है? Hi, my name is Aditi. ओके, क्या पढ़ाई कर रहे हो? I have taken HR specialization, and along with that, I have BFSI, that is Banking, Finance and Insurance, as my minor specialization. कौन से ईयर में हो? So मैं second year में हूँ. ओके, आपका नाम बताओ। उपासना भट्टाचार्य. क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? I am from Finance and Business Analytics. ओके, कौन सा ईयर है आपका? Second year. आपका नाम? Neha Ahire. ओके, I'm from second year and I've taken marketing and business analytics. और सेकेंड ईयर में हो, राइट? Second. आपका नाम? I am Chirag Agarwal. So I have chosen BA with finance in second year. आप? Rishit Basu. I'm in first year and we don't have any specializations. ओके, Hi, my name is Divya Dubey and I am from PGDM first year. ओके, ठीक है। देखिए, हमारे किसी भी कॉलेज को रिव्यू करने का तरीका थोड़ा अलग है, राइट? चूँकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होता है, तो हम थोड़ा रेगरस मैकेनिज्म फॉलो करते हैं किसी भी कॉलेज को रिव्यू करने का। आज सबसे बड़ा सवाल जो मैनेजमेंट स्टडीज़ को लेकर आ रहा है ना, वो ये है उसकी रेलेवेंसी पे, कि क्या मैनेजमेंट स्टडीज़ की कोई रेलेवेंसी रह गई है जो नॉन प्रीमियम कॉलेजेस हैं उनके। अब इसके पीछे कॉर्पोरेट्स क्या तर्क देते हैं कि जो भी ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं मैनेजमेंट कॉलेजेस से, उनमें वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उनको जॉब दे पाएँ, राइट? तो अब उनके पीछे उनका तर्क ये होता है कि जो सिलेबस का पार्ट है आपका, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो आउटडेट हो चुकी हैं बहुत पहले, और आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है। तो अभी मुझे आप ये समझाओ कि ISBR का जो करिकुलम है वो किस तरीके से मार्केट के सिंक में है, जो मार्केट डिमांड कर रहा है, क्या वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं? The curriculum is very much rigorous and it is very much on the basis of standard practices. And if I talk about HR, so in HR we have been teaching us analytics, which is comprising of Power BI, Orange, which is very much necessary to be in this field. Okay. So I can say that definitely they are matching the standards and they are giving us all those skills like leadership skills, communication, interpersonal skills, which is very much necessary to be in a corporate. So I can say that definitely the educators are not just educators, they are mentors for us, who are teaching us, who are giving us their real experiences and how we can take those experience and inculcate that experience into us. आपने बताया BFSI भी आपने ले रखा, राइट? तो डिमांड है बहुत ज़्यादा इस कोर्स का, राइट? तो उसका करिकुलम किस तरीके का है, उसमें किस तरीके की रिसर्च की गई है इस करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए, और क्या जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको रेलिवेंट जॉब्स मिल पाएंगी? Okay, so from starting itself, I have a very keen interest in finance. So when this minor subject came in, so I saw the subject. So there are 3 subjects into it. That is e-trading, fintech, and e-banking. So you know that fintech is growing very much rapidly, and how fintech companies are growing and their demand is also increasing. That has been included in curriculum. And coming to e-trading, so you know algo trading is very much prevalent nowadays. So that is also has been taught to us. I think the curriculum is very much relevant to what is going in the market right now. So I think I have a confidence that if I go to an interview, then definitely the relevant questions are there, then I can obviously answer them. गॉट इट। आप बताइए, आपको क्या फील होता है, आपने जो स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है और जो मार्केट डिमांड कर रही है, वो स्किल्स आपके अंदर कैलकुलेट हो रही है यहाँ से पढ़ाई करने के बाद? I will start from scratch. I am from the engineering background. Okay. When I came here, I didn't have any knowledge about the business and the business world. Though I was working in Wipro, but then when I came here, I got to know I have taken finance with analytics. In finance, most of our professors are not just highly educated, but also highly experienced in the corporate sector. Like most of them are ex-bankers. This college has not just helped me in corporate skills, but I also achieved my milestone that I wrote my own book. That is on finance. I think this proves that this is... क्या नाम है आपके बुक का? मेरे बुक का नाम है Financial Mastery, which talks about limited resources, like how to manage finances with the limited resources we have. आप मुझे एक चीज़ और समझाओ, आप ऑलरेडी विप्रो में काम कर रहे थे, राइट? तो आपको MBA या PGDM करने की नीड क्यों फील हुई? I was in engineering field. Management is managing all the functions that are going on. I was a software engineer. I used to look up to my managers, so how they manage the team. I think I will have that operational
knowledge as well. करियर प्रोस्पेक्ट क्या देखते हो आप? अभी आप विप्रो में काम कर रहे थे एज एन इंजीनियर, यहाँ से जब आप मैनेजमेंट करके पास आउट हो गए तो क्या करियर प्रोस्पेक्ट आपको लगता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ले रखा है? I have this keen interest in analytics and also finance, which was missing in engineering. Okay. Right now, I want to step into financial analyst thing because I do have a background with analytics and also I have taken business analytics here. So I'm learning here as well. आप बताइए, आपको क्या लगता है जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ने के बाद जॉब मिल पाएगी आपको? पहला सवाल तो ये है। और जो करिकुलम है आपका वो कितना सिंक है मार्केट जो डिमांड कर रही है उससे? Okay, so I think my friends have already covered all the points, but there is one thing, we have corporate connects. So we have people coming from corporate to teach us various things, various skills. So आपका जो सवाल है कि हमें जॉब मिलेगा, स्किल के वाइज मिलेगा नहीं, आई थिंक हमें मिलेगा बिकॉज वी ऑल आर रेडी. हमें अभी जो सेकेंड पार्ट है हमारा सेकेंड ईयर में, वी आर लर्निंग बिजनेस एनालिटिक्स. सो इनमें हम बेसिकली जो केस स्टडीज़ है वो के हिसाब से हमें पढ़ाते हैं, तो आई थिंक या हम है रेडी. ओके, ठीक है. अगला सवाल जो होता है मेरा वो ये होता है कि चलो ठीक है, आपने कॉलेज ने बहुत एफर्ट्स दे के अपने करिकुलम को जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंग सिंक में ले लिया. अब जो आपको पढ़ा रहा है वो फैकल्टीज़ कैसी हैं? अब जब मैं पूछता हूँ कि फैकल्टीज़ कैसी हैं तो उसमें दो चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ ब्रॉडली. पहला कि जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही हैं क्या उनके पास केवल और केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या कुछ फैकल्टीज़ आपके यहाँ ऐसी भी हैं जिन फैकल्टीज़ ने खुद कॉर्पोरेट में काम किया है? तो आप ज़रा सा डिटेल में इस पर बताओ आप मुझे. So, initially, if I should say, our teachers, they have 10 years minimum work experience. कितनी परसेंट फैकल्टीज़ होंगी जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है? Almost 80 to 90% of our faculties have at least minimum 10 years of work experience. अच्छा, मेरा सवाल अब ये होगा कि इन्होंने बताया 80 to 90% फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, तो क्या आपको डिफरेंस फील होता है जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और जिनके पास नहीं है, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ में जो वो अप्रोच लेते हैं आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाने में, या अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो आपके साथ शेयर करते हैं? Absolutely so. As my batchmate rightfully mentioned, that the majority of the faculties are they have extensive corporate experience. So when they come with that rich background, we can understand a lot of nitty-gritties, corporate nitty-gritties from them. They can actually tell us what actually happens there at corporate, which we might not be aware of. Right. A very few people have work-ex who have gone through that, but majority of them who are freshers, they might not be aware of what actually happens in the corporate. So they will be able to groom us accordingly. They will be able to develop the skills we have and accordingly shape us into individuals, basically make us corporate ready at the end of the day, so that we can be effective managers or leaders for that matter. We also have people who teach us entrepreneurship who themselves are entrepreneurs. They groom us in such a way, they create that urge in us to learn more, to acquire the knowledge, so that we can apply these things into practical spheres and achieve whatever we want to. ठीक है, मैं आपके बोर्ड पे देख रहा था, एक इंटरेस्टिंग सा टैगलाइन मुझे दिखा, रियल वर्ल्ड रियल लर्निंग. तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कितना रेलेवेंट है ये टैगलाइन यहाँ के लिए? Yeah, as I already said, the real world means it's the we have to face the hardships of the world. World is not a rosy place. Right. So also it will make us ready to face whatever comes our way. So whatever adversities we might be facing in future, it will make us absolutely ready for that. And real learning is everything. Without learning, we won't be able to even if we have the skills, in order to upskill ourselves, in order to develop whatever we have, to work on our strengths, we need to have learning. So that learning is imparted by our faculty. So this is what they impart to us. So that in a way, it's it's combining real world and real learning and making us ready, culminating both the bests of both the worlds into us and making us ready to face whatever we face. आपने बताया फर्स्ट ईयर में हो अभी, राइट? ठीक है, आप मुझे ज़रा सा ये एक्सप्लेन करो, जब आप अपने कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग वाली जर्नी में होगे तो आपके सामने बहुत सारे कॉलेजेस आए होंगे, राइट? तो आपने ISBR को ही क्यों कंसिडर किया और क्यों फाइनलाइज करके यहाँ पे एडमिशन लिया आपने? So, selecting ISBR as a college was my first preference, this college, because I already have two of my friends who are passed out from this college, and I got a really good review from them. And secondly, it is in a place which is open doors for freshers and open doors for job opportunities. That's why I chose this college. Are you satisfied? I mean, अभी कहीं आपको regret तो नहीं होता है कि डिसीजन लेने से पहले? अच्छा, बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को. जो चीज़ें आपको आज पता है जब आप एडमिशन लेके यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, और आपको जो चीज़ें पहले पता थी, अगर आपको आज ये चीज़ें पता है जो चीज़, तो क्या आप ये जानने के बाद भी एडमिशन लेते हैं यहाँ पे? Definitely मैं एडमिशन लेती, because obviously this is a very good college. I mean, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर, it is a place
where you will get grooming, proper grooming. Practical knowledge की बात करते हैं. There are lot of things going on in the curriculum. You have practical knowledge, getting practical. People from corporate world are coming and teaching. In fact, this college provides us with outbound training as well. And then we have recently I went to 2 of the events. One is G20 events that college took us. So it's like it's getting practical knowledge, going there and learning and seeing people what they're doing there. And the one is from Wells Fargo conducted a seminar. For that we did the volunteering part. So obviously it's a practical knowledge that you're getting. So obviously I don't regret coming here. चलो करिकुलम ठीक है, आपकी फैकल्टीज अच्छी हैं, ठीक है. अब मुझे समझाओ कि इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके की मिलती हैं यहाँ पे, एंड मैकेनिज्म क्या है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कर, मतलब टाइमली कैसे अपडेट मिलता है आपको, क्या कोई ग्रुप क्रिएटेड है या ईमेल्स के थ्रू मिलती हैं आपको? तो अपडेट्स हमें ग्रुप के थ्रू मिलती है. वी हैव वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड Alma Connect. Okay. So there we get all this information. Recently we had PwC, L'Oreal, and HP, and EY as well for our internship, and we have a dedicated platform for it. Like we used a Superset where everything is very much in a sync. Whatever the updates are coming, which our companies are coming, what are their requirements, their package and everything. And also for our placement, we are using again a Recalta platform which is truly dedicated for this placements opportunity, where everything related to job description, what will be the assessment, and what will be the package, every detail is disclose, and it's a very good platform because it makes the process very streamlined, and understanding and applying becomes very easy and convenient. ठीक है. आप लोगों ने कौन कौन से इंटर्नशिप्स किए हैं, कितनी इंटर्नशिप्स किए हैं आपने? I have done one internship, but previously I have 1 year of work experience. I've done one internship that I got from on my own, and I've done it in Porsche Center, Bangalore. So it was for 2 months. अच्छा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, PGDM का कोर्स करिकुलम का पार्ट होता है मैंडेटरी इंटर्नशिप, राइट? तो क्या यहाँ भी ऐसा है? Definitely, we have to do internship after completing our 1 year. So we have to do the summer internship, which is mandatory. And if possible, they will give us opportunity to do a winter internship, even after getting a placement, if we are getting time, because our joining will be after completing the curriculum only. So if possible, we can again do an internship. That is not an issue with the college. तो आपने तो ऑलरेडी जॉब कर रखा है, तो आपको इंटर्नशिप करते टाइम मतलब कैसा लगा कि आप तो सैलरी पे काम कर रहे थे, यहाँ फ्री में काम करना पड़ा या कुछ मिला था आपको? No, पेड था it was paid. पेड इंटर्नशिप्स की भी अपॉर्चुनिटी. बेसिकली मैं वही समझना चाह रहा था कि पेड इंटर्नशिप्स और अनपेड दोनों तरीके की इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, राइट? तो प्लेसमेंट्स एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, जैसे मैंने बताया आपसे. तो आप बताइए जरा प्लेसमेंट्स का डेटा क्या है. पहले तो मुझे ये समझाइए मिनिमम प्लेसमेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक स्टूडेंट. ठीक है, मिनिमम वैसे किसी को चाहिए नहीं होता है, बट स्टिल मिनिमम एक रफ आइडिया दे देता है कि यहाँ से क्या निकल सकता है, बेयर मिनिमम. तो दूसरा आप एवरेज प्लेसमेंट बता दीजिए और हाईएस्ट प्लेसमेंट बता दीजिए, और कोशिश करिए कंपनीज का भी नाम बताइए कहाँ पे प्लेसमेंट. Okay, so if I talk about the minimum placement, that ranges between 6 to 7 lakh last year, and this year it has mended to 7 to 8 lakh minimum. Minimum, yeah. Okay. Minimum package. And coming to the average package, last year it was ranging between 8 to 9 lakh. And this year we have just started with our placement, so the average we are not able to disclose it right now. And coming to the companies, so last year we have a PwC, Federal Bank, then ANZ, HDFC, Sutherland, and all these banks and the major companies has come for the placement. And till now we have PwC has came, again Sutherland has came, and one logistic company has came, and V Commercial has came till now. So and the package that they are offering is very good as per of right now. Okay. Highest placement क्या था? Highest placement was 14 lakhs last year. That was offered by Federal Bank. तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या जाता है अगर एक स्टूडेंट यहाँ से PGDM करता है, तो टोटल फी क्या होती है उसके? Total fee in our time it was 9 lakhs. So yeah, I am satisfied with the ROI. मतलब 9 लाख रुपए लगा के, अगर आप वैसा समझना चाहो तो 9 लाख रुपए लगा के आप 9 लाख रुपए तक एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरेज, राइट? ठीक है. अब मुझे ये बताओ प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है आप लोगों के, और क्या ग्रूमिंग किस तरीके से ग्रूम करता है आपको? इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताओगे किस तरीके से ग्रूम करता है. एक्सेल को कवर कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि एक्सेल बहुत आप तो जानते ही होगे, राइट? तो ये सारे पार्ट्स को एक बार आप कवर कर दो ताकि जो भी व्यूअर्स हैं उनको पता रहे. Yeah, so for placements we have our weekly sessions on Saturdays. Some industry experts come and talk to us regarding the whatever skills that are required, or maybe take us sessions like for resume building also we had several sessions. And apart from that,
on online basis. Every day we have placement trainings, like the mock interviews, the mock GDs, all those things. And also about the Microsoft skills and programming skills. We have classes and certifications for that. सीरियस डिस्कशंस बहुत हो चुके हैं, आप मुझे थोड़ा सा कैंपस लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि यहाँ आके क्या केवल पढ़ाई ही होती है या थोड़ा कैंपस लाइफ भी है जो जिया जा सकता है? So we have different committees and clubs in our college for entertainment. कौन से क्लब्स? Like finance club is there, entertainment club is there, HR club. So all domain specific clubs and entertainment clubs and all also there, cultural clubs. तो मैंडेटरी है ऐसा कि आपको इतने क्लब्स में पार्टिसिपेट करना है या आपको पार्ट होना, ऐसा कुछ मैंडेटरी है? Not necessarily, but it's always good to be in a group, I mean in a club, and try to be as much mixing with all of them. So it wouldn't be like just studies only going on, but there will be some extracurricular activities as well, and you get to know about your skills too. ठीक है, आपको क्या लगता है ये जो क्लब्स होते हैं इनका क्या रोल होता है ओवरऑल, या केवल टाइम पास के लिए होते हैं ये? Actually, from our year, that is, we are in the first year now. So they've actually mandated all of us to participate at least in one of the clubs. Okay. The main reason behind this, which I actually like, is participating in clubs actually help. See, there's always an ulterior motive behind whatever is done by the college. So here we have that participating in a club, we actually, helps us excel in our team building activities. It helps us have our communication skills more honed. And it also helps us in we have leaders leading the club. We have positions of responsibilities like core committee members who might be in charge of finances, PRs, marketing, and so on and so forth. So these positions of responsibilities actually help us in leading. They will actually make us in better leader. They will groom us to be better leaders. And also at the same time, it will also help us, excel our analytical skills and also time management skills, because club में participate करना mandatory है. Also studies भी बहुत important है, which is indispensable, so to say. So you have to manage your time accordingly and then give the best output. So that's how. ठीक है, अभी एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, माइंडसेट शिफ्ट कह सकते हैं. अभी इंडिया बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज में है कि अब हम जॉब क्रिएटर वाले माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जॉब सीकर वाले माइंडसेट की तरफ से निकल के. तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको रिस्क लेना है तो सबसे बेस्ट जगह है आपके कॉलेज में, राइट? तो अभी क्या स्टार्टअप्स को लेके यहाँ कोई इंक्यूबेशन सेल्स बने हुए हैं, फंडिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर किसी को ब्रेनस्टॉर्म करना हो अपनी किसी आइडिया पे तो फैकल्टीज़ कितनी अप्रोचेबल है? जरा सा स्टार्टअप का माहौल कैसा है उस पर डिटेल में बताइए. Startup के लिए we have a different subject called entrepreneurship and startup. For that, we have been working like every class is mandatory. A group of people, I mean, the class is divided into different groups, and it's mandatory for them to bring up with an innovative idea. Be it innovative or not, everyone comes up with the idea and works on it. They critically analyze the things. They critically analyze the scenario of the business. When we start thinking about the innovative ideas, we get more ideas and ideas. So this is working out for the startup. And there are a lot of people in our college who are already doing startups. The second year students will know this more. आप स्टार्टअप के बारे में बताइए जरा सा, क्या माहौल है और क्या कोई ऐसे स्टार्टअप है आपके यहाँ पे जिन्होंने 0 से 1 to स्केल किया हो? आइडिया है कोई आपको? I think everyone has created at least one startup because in our first year it's become a very mandatory from our entrepreneur cell to have one startups, and we know what are all the steps, how to do validate the idea, how to make a proof of concept क्या होता है? Exactly. So we are in a stage where we can at least know कि what is the concept, how to build, how to make a startup, and if many of are there who wants to go for an entrepreneurship journey, so I think they are pretty much having a knowledge that how startup works and how they can contribute to make it to a large. आपको क्या लगता है किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है आप स्टार्टअप्स को लेकर? Yeah, but because from our college, like in the intercollegial startup competitions, in almost all the competitions in Bangalore, our college had the first or second rank. Okay. So I think people who want to build startups, they have scope. Okay. And also it was mandatory for us as well. Okay. ठीक है, अब एक सवाल का जवाब आप लोग जरा और ऑनेस्टली के साथ देना. आप कहाँ के रहने वाले हो? मुंबई. आप? भोपाल. आप? कोलकाता. आप? Kerala. आप? कोलकाता. आप? कराची. ठीक है, अब मुझे ज़रा ये समझाओ और मेरे थ्रू मेरे व्यूअर्स को आप ये समझाओ, बैंगलोर को लेके एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है जब बच्चा MBA PGDM के लिए कॉलेज देखने जाता है. तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या एक्चुअल में वो जो एक्सपोजर की बात होती है कि अगर मैं बैंगलोर जाऊँगा तो मुझे नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर मिलेगा, तो क्या एक्चुअल में वो एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे, और अगर नहीं मिलता है या मिलता भी है तो क्या किस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है कंपनीज को उस एक्सपोजर को पाने के लिए?
I think it depends on you how you approach people. Because see, I'm staying in stanza. पहले तो ये बताओ एक्सपोजर मिलता है आपको यहाँ पे? हाँ, मिलता है. अच्छा ठीक है, हाँ आप बताओ कैसे मिलेगा? I'm staying in stanza. In stanza, we have people from corporate as well. Okay. So it's not like only students are staying there. So there, I've made connections with a lot of corporate guys and Okay. people. So yeah, you'll get options, you'll get opportunities work wise. आपको क्या लगता है, आपको मिल रहा है वो एक्सपोजर जो सोच के आप आए थे यहाँ पे? Or definitely, like I have come from a small city, so exposure thoda kam tha, but if I compared from last 1 year, I have transformed a lot. And in terms of street smartness, ab mein bahut develop hoti if you go outside and if you meet, because every second day or the third day, some person from outside is coming, be in any domain. So you try to connect, you try to talk with them, you try to build connections. At least you learn how to communicate to them, how to present yourself. I got my internship in Bangalore itself. So again, all those 2 months, I get a very good exposure how to connect to people in my domain and as well as in other domain. So it helped me a lot to get that exposure to how to develop my personality. Because first you have to develop a personality, then comes the career. So now we are too much ready for the interviews because we have been given so much training and we have been talking to the people. So now I think many of are there like who are not that much scared or having a low confidence to at least face an interview. Okay. आपको क्या लगता है एक्सपोजर मिलता है बैंगलोर में? Yes, as Bangalore is a city, Silicon Valley of India. So yeah, company. And traffic city of India as well. Of course, for sure. But it is also the Silicon Valley of India, and especially in electronic city, there are so many companies. So choosing the college here helps us to get the industry experts more. Like every week, at least 1 or 2 industry experts come to our college. This is because that they are in Bangalore. They are already in Bangalore, especially in startups as well. Most of the startups are here only in Bangalore. Okay. So yeah, there is an exposure, and also we stay in PGs or hostels wherever. We get exposure, as she's already has spoken about it. ठीक है, एक अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है, आपका लोकेशन काफ़ी सही है, मतलब स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है आपका कॉलेज. अदरवाइज एक्सपोजर की तो छोड़ो, अगर आप यहाँ से बैंगलोर के एक छोर से निकल के दूसरी छोर पे जाना होता ना आपको, तो आप एक दिन तो आप ट्रैफिक में रह जाते, फिर एक्सपोजर तो छोड़ ही दो, है ना? तो आप कैसे झेलते हो इस ट्रैफिक को? So I don't generally roam around much because actually all startups and companies, all corporates are here, and I live in a PG, so I also have certain corporate people working there. So I get to know how they are working, what hardships they face, and what sort of benefits they get from their companies, and we get an overview of which companies we may want to get in if we ever get an opportunity. So exposure wise, definitely there is exposure over here. आपको एक्सपोजर मिल रहा है बैंगलोर में? Definitely. Okay. Yeah, I live in a PG where there are a lot of people, a lot of people from working in Wipro, Infosys, and other companies, CGI and etc. My roommate is from CGI. So it's like getting to know from them. They are talking about their skills and they're talking about what is required to be in that position. So it's like obviously giving me, and coming to the college also, there are a lot of people coming, lot of industrial people coming. It's a good place to network. First, I have made so many networks till now, and even being in a first year, and they communicate with you. Even if you try to communicate with them personally, they're always open to communicate. So that's how they help us, and that's how exposure that you're getting. चलो, आप लोगों से बात करके ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहा है तो अच्छा ROI निकाल सकता है. अब मुझे ज़रा ये समझाओ, आप दोनों चूँकि अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पे, किस तरीके से एडमिशन मिलता है यहाँ पे? So there are certain exams, national level exams that you have to. मैंडेटरी हैं वो एग्जाम्स देना? Mandatory and college level exam भी होता है. Okay. So it's like I came from MAT. So you have to give your examination and certain score is there. You have to qualify that. ठीक है. After that you can fill up the form and they will assist you throughout. Assess in the sense कैसे इंटरव्यू होते हैं आपके, GDPI होते हैं, किस तरीके से होता है assessment? So basically what she said, just adding to it, so if you get a certain score in one of the national examinations, then you are exempted from taking the ISBR examination. So ISBR examination is basically the second level of the interview process. Then third level, if you're shortlisted, then for third level, your profile goes to the college. They call you for an interview. So for the interview, again, there are 2 levels. They give you a topic on which you have to prepare and present. So they also check your presentation skills and your communication skills. Okay. After which you qualify to the final round, which is a personal interview taken by one of the professors or a panel of professors. And after which they publish the list. Okay, ठीक है. चलो,
ब्रॉडली हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जैसे कोई बच्चा नया आ रहा है, उसने कंसिडर किया, एडमिशन ले लिया, तो आप लोग तो पुराने हो चुके हो, आप मुझे ये बताओ ज़रा कि यहाँ पे उनका पूरा का पूरा 2 साल स्मूथ रहे, इसके लिए वो क्या चीज़ें कर सकते हैं जो आप लोगों से शायद मिस हो गई, या यहाँ पे मतलब हैक्टिक होता होगा जब आप नए नए आते हो तो, राइट? तो क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जिससे कि उनका 2 साल स्मूथली निकल जाए? I would say they can work on their communication, as we rightly mentioned. Then they can build, they can build network. That is like one of the great opportunity Bangalore is providing to you. And they can focus on your studies, of course. Studies is important. And these 3 things are. आप कुछ ऐड करोगे? So adding to a point, कॉलेज लाइफ स्मूथ निकले उनकी? first be ready, because first year would be hectic. You cannot expect to come by 9 and leave by 2 or 3. It could be possible that you're coming at 8 and leaving by 8 as well. So be ready, and also Saturday, Sundays might be not be a free for you. Okay. But if you take them all the things seriously, then definitely they are going to pay you in the future, and not later future, in very near future as well. So just be calm and be ready for all the challenges that are coming, and focus on a study a bit, because definitely studies matter a lot, and just enjoy all the way. आप मुझे ज़रा ये समझाओ, लेट्स से बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आप सबके सब लोग, राइट? तो कॉलेज पहले 1 हफ्ते में या पहले 2 हफ्ते में क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, या इन्होंने अपना करिकुलम किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि सब लोग एक पेज पे आ जाओ? जैसे आप एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, राइट? तो ऐसा क्या मतलब किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है अपने करिकुलम को स्टार्टिंग के 1 हफ्ते 2 हफ्ते? Though I'm experienced, but I'm experienced in some other engineering. Right. So, like when I came here, everything was very new for me. As you asked them the question about what one should do, so I think I should answer that first. बिल्कुल. Because before coming here, first of all, they should know something about accounts, accountancy and everything. The basics of accountancy, the basics of statistics. All those basics. And after coming here also, we have that 1 year of, not 1 year, 1 month of orientation program, where they brush up our fundamental skills, like all these accounts and statistics and all. But it's good to know something from before, like the Excel thing, or any programming language, or anything that is relevant to the business world right now. I think if they have any idea from before, now they will be having some time after the results come out, and before they join the college. So I think they should use that time to hone these skills. Okay. आप कुछ ऐड करोगे इसमें? I think they have covered most of the part. Okay. आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? फ्रेशर्स जो आ रहे हैं अभी न्यूली ज्वाइन किया उसने, तो उसको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे आप? Basically, again, I come with a work experience again. I have around close to 2 years of work experience. So for freshers, again, the same thing as she already said, that brush up your skills. And okay, one thing that another positive thing that the college provides is a PMP, that is a pre-masters program. Okay. So after we are selected and before we actually join here physically, we are actually given a training on certain case studies, on how to solve case studies, on how to critically think and analyze certain things. So this is basically covered under the umbrella of pre-masters training. Okay. So if you are done with the pre-masters training, also we have mentorship programs conducted with the college before our classes begin. So these actually make you ready to face whatever the college has to provide. अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि एलुमनाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? तो एलुमनाइज को करेक्ट करने के लिए क्या तरीके यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? So I am from alumni ambassador team. Okay. So Great. So we have a team that connects to the alumni. Every month we have one session, taking one batch and calling them, sending them mails, inviting them. Now we do it online on online basis, because obviously nobody is available here. Some of them are outside India as well. So every month what we do is we call them, we greet them, we ask their reviews about the college, we ask them where are they placed, and I have got so many good reviews. And every month we conduct a meeting, online meeting, where everyone comes, every alumni comes, and they share their experience. They share their experience about the college, and beyond the college, how their work experiences and how helpful ISBR to them in after the graduation. So that is how we. Okay, ठीक है. I think जो भी डाउट्स आपके मन में होते हैं किसी भी कॉलेज को कंसिडर करने से पहले, वैसे मैक्सिमम डाउट्स को हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की डायरेक्टली यहाँ के स्टूडेंट से ही बात करके. इसके बावजूद अगर कोई डाउट्स आपके मन में स्टिल रह जाते हैं,
तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाएँ। टिल देन थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड आप सबों का भी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया अपने कॉलेज के बारे में।